इम्पेरेटिव जांच। इम्पेरेटिव जांच जो है हमारा लास्ट टाइम जैसे डिस्कशन हुआ था, मैंने आपको बताया था फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों में होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। जो इसका फॉर्मल वे है उसमें सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम रहेगा, दोनों में सेम रहेगा। ओके, लाइक कि मैंने आपको बताया था एक सिंपल सेंटेंस अगर लेते हैं तो जी ट्रिंकन ए। ओके, इसका इंपेरेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, ट्रिंकन जी, और यहाँ पे इंपेरेटिव साइसन आ जाएगा, राइट। ये जिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम रहेगा। ओके, यानी क्वेश्चन यहाँ तक कोई आपका इंपेरेटिव इनफॉर्मल में बात करेंगे तो इसका जिंगुलर और प्लूरल दोनों अलग अलग होंगे। ठीक है, जैसे हम जिंगुलर की अगर बात करें तो लाइक हम कहते हैं कॉल मी, तो वैसे अगर कहेंगे नॉर्मल सेंटेंस में तो हो गया डू रोस्ट मिस हन। ओके, और इसका जब हम इंपेरेटिव बनाएंगे तो सिंपल ये जो वर्ब है ये इधर आएगी रूफ, दो भी कट गया और इसका एसटी भी कट गया। अब रह गया अपने पास सिर्फ रूफ देन मिस और अन, इसका मतलब हो गया कॉल मी। सिंपल हम अगर कहें ना कॉल मी तो रूफ मिस अन, क्लियर है। और इसका प्लूरल अगर बात करें तो दो का प्लूरल होता है ईयर, ईयर रूफ्ड मिस अन। ओके, तो इसको जब हम इंपेरेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो ईयर हट जाएगा, बाकी एज इट इज रहेगा और ये हो जाएगा रूफ्ड मिस अन, दैट मीन तुम सब मुझे कॉल करना। ओके, यहाँ तक कोई इश्यू? नो सर। सिंपली मैंने बताया था कि वर्ब और सब्जेक्ट अपनी पोजीशन अदला बदली करेंगे, वर्ब फर्स्ट पे आ जाएगी। इसके अलावा थोड़ा सा और रेस्पेक्ट में बात करने के लिए हम जो बीटा यूज करते हैं प्लीज वो यहाँ पे हम एंटर करवा सकते हैं। ठीक है, अशोक आप ये दोनों पढ़िए एंड देन ध्रुमित आप ये दोनों पढ़िए। जी ट्रिंकन वाशर, ट्रिंकन जी बीटर das washer, जी bringen die Zeitung, bringen sie die Zeitung, Sie nehmen die Tabletten, nehmen Sie bitte die Tabletten. Sie kommen rein, kommen bitte Sie rein. ओके, इनकी सेंटेंसेस को लेके कोई इश्यू, कोई डिस्कशन? नो सर। लॉजिक समझिए, पहला चेंज सब्जेक्ट फर्स्ट पे आ रही है और वर्ब फर्स्ट पे आ रही है, सब्जेक्ट सेकंड पे जा रहा है, राइट। और सेकंड चेंज जो पुंक्ट है पुलिस स्टॉप जिसको बोलते हैं वो इंपेरेटिव सेशन में चेंज हो रहा है एक्सक्लेमेटरी साइन में। ठीक है, प्लूरल और जिंगुलर दोनों में सेम रहेगा, मतलब जिंगुलर में भी यही फॉर्म रहेगी, प्लूरल में भी यही रहेगी। ओके, इनफॉर्मल में जिंगुलर की अलग रहेगी और प्लूरल की अलग रहेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं जिंगुलर की, दो हट गया फर्स्ट हो गया और अपनी जो फॉर्म फॉर्म जो है वर्ब की एज यहाँ पे आ गई, फर्स्ट लेटर कैपिटल हो गया। और अगर इसको पोलाइट बनाना तो यहाँ पे बीटा आप ऐड कर सकते हैं,
right? So then Abhishek and Vignesh. Abhishek. अभिषेक सुन पा रहे हैं मुझे विघ्नेश? Yes, sir. Yes, read the sentences. Du trinkst das Wasser, trink bitte das Wasser. Du bringst die Zeitung, bring bitte die Zeitung. Du nimmst die Tabletten, nimm die Tabletten. Du kommst rein, komm bitte rein. ओके, इसका प्लूरल फॉर्म पे जाएंगे तो सिंपली क्या करना है अपने को, ईयर को हटाना है और एज इट इज यूज करना है। पुंक्ट जो है फुल स्टॉप वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे अगर आपको प्लीज लगाना तो इस जगह पे लगेंगे ट्रिंक्ट बिटे das Wasser, ट्रिंक्ट बिटे das Wasser, ट्रिंक्ट बिटे das Wasser. Okay, so Prajal with the sentences. Drink das Wasser. Drink bitte das Wasser. Bring die Zeitung. Bring bitte die Zeitung. Nimm die Tabletten. Nimm bitte die Tabletten. Komm rein. Kommt bitte rein. Okay. So हम जैसे शॉर्ट में कहते हैं ना किसी को, जैसे खाना खा लो, पानी पी लो, अंदर आ जाओ, बैठ जाओ, आओ चले, तो ये शॉर्ट जो डायलॉग्स है ना ये सारे इंपेरेटिव होते हैं, ठीक है ना। Yes, then Ashok, Amit, again Prajwal, and Vignesh. Read the sentence. Essen Sie Fehler obst. Ist Fehler obst. Ist Fehler obst. Machen Sie die Übung. Mag die Übung. Mag die Übung. Gehen Sie ins Fitnessstudio. Geh ins Fitnessstudio. Geht ins Fitnessstudio.
Nehmen Sie einen Apfel. Nehmt einen Apfel. Nehmt einen Apfel. Yeah, next, Vignesh. Kommen Sie morgen zum Training. Komm morgen zum Training. Kommt morgen zum Training. Seien Sie nicht so nervös. Sei nicht so nervös. Seid nicht so nervös. Okay. Any question? Haben Sie Fragen? Okay. Yes, Ashok. Both question. Fill here verb. Kaufen. Ergebnis. Ich. Yes, the verb is essen. To eat. और do के साथ हो जाती है to eat. और यहाँ पे क्या यूज होगी? do हट जाएगा और इसके एंडिंग में हट जाएगी तो ich mehr gemüse. ओके, देन वर्ब है यहाँ पे फैन ट्रेन बार है ना, तो फैन ऑलरेडी यहाँ पे है और जेन जो है वो डू के साथ हो जाती है डू ईस्ट. डू हट गया, एस टी हट गया, इसका एंडिंग अपने पास क्या रह गया? जी निश्च तो फील फैन. ओके, गुड. नेक्स्ट ब्रोमित. यहाँ वर्ब है लाउफन और यहाँ पर वर्ब है अपनी ट्रिंकल. राइट, बनाइए. Nicht so langsam. प्लूरल भी है यहाँ पे. Laufen. तो फिर laufen. Lauf, schneller. या लाउफ्ट, बिकॉज प्लूरल में ईयर के साथ हो गया आपका लाउफ्ट. ओके, और इसमें सिर्फ हम ईयर को रिमूव कर देते हैं, लाउफ्ट एज चीज यूज करते हैं. सेम हियर ट्रिंकन. Trinkt mehr Wasser. सिंगुलर है यहाँ पे, प्लूरल नहीं है. तो जिंगुलर में हम दो के साथ यूज करते हैं ट्रिंक्स्ट. Trinkst mehr Wasser. ड्रिंक. ओके, तो ड्रिंक मेयर वाटर. Okay. राइट. So what is the meaning of love? या Laufen. लाउफन टू रन. Answer. Langsam. Nicht so langsam. Langsam. langsam, nicht so langsam, not slow, run fast. Okay.
तो अगेन यहाँ पे अपने पास वर्ब है स्पीलन और यहाँ पे अपने पास है माखन या फिर ट्राइबन, ओके। और यहाँ पे अपने पास वर्ब है स्विमन, राइट। सो सिंगुलर में स्पीलन का क्या होगा, डू स्पिल्स्ट, डू Spilled. स्पिल्स्ट, है ना। अब दो भी हट जाएगा, एस टी हट जाएगा, रह गया अपने पास सिर्फ Spill. स्पिल, ओके। सेम यहाँ पे या तो मार्क या फिर ट्राइब, Mark. अपने पास दो ऑप्शन रहेंगे, मार्क या फिर ट्राइब। मार्क दोकमाल स्पॉट और ट्राइब दोकमाल स्पॉट, ओके। देन स्नेलर वाज पास्ट ईयर, स्विमन प्लूरल है, हियर के साथ क्या होगा, स्विम्ड, हियर हट जाएगा, स्विम्ड रह गया। फिर किस चीज का, मनन, read the sentences. मनन, list two digits से, Spill Nick so wheel Mac Dodge Malsport Shanner. So what is this like? 6-1. Schneller, fast, No, that second that word you write in the box. yeah, schneller, swim schneller, okay, swim fast. So what is the meaning of that swim? Swimman, to swim, तैरना, Okay. ओके। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन आपका, बाबा जी, नो प्रॉब्लम, No, sir. ओके, गुड।